Good evening to everyone. Yesterday, we studied the concept related to finding the unit place, finding the unit place of integral power of numbers. Quickly, I am repeating what we have seen here. The first case we have seen yesterday, that whenever if the unit place of a base is 0, 1, 5, 6, it follows the power cycle of 1. It follows the power cycle of 1. So in case of 0 raised to anything, always ends with 0. Unit place of a base is 1 raised to anything, always ends with 1. Same with 5 and same with 6. Yesterday we discussed this particular case in detail. Now, if you are coming across the numbers where the unit place of base is 4 and 9, in that particular case, 4 raised to even number always ends with 6. 4 raised to odd number always ends with 4. 9 raised to even ends with 9, and 9 raised to odd always ends with 9. This is also we discussed yesterday in detail, and this particular case is called as power cycle of 2. This is the power cycle of 2, and the power cycle of 2 is applicable for these two digits, that is 4 and 9. Power cycle of 1 is applicable for 4 digits, that is 0, 1, 5, 6, that we have seen. Now, let us go to the last third case जो हमने देखा था, that is the case in case of 2, 3, 7, 8. Yesterday I told you that perfect square number never ends with 2, 3, 7 and 8. Now this follows the power cycle of 4. This follows the power cycle of 4. So for this, what we have to do, we have to divide the index by 4 and we have to find the remainder, and that remainder will be your new power. For example, suppose 83 raised to 27, and if I want to find the unit place of this expansion, so what I will do, I will divide this number by 4. And when you are dividing this by 4, so what is the remainder now? Remainder will be 3. So unit place of this is 3 and the remainder is 3. So 3 raised to 3 is 27. So 7 will be the unit place of the whole expansion. This is what we studied yesterday. In case of 2, 3, 7, 8, power cycle of 4 is followed. That's why we have to follow these two steps while finding the unit place of a numbers whose base values are 2, 3, 7, 8. इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन रूल मैंने कहा था आपको. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज इफ आई एम सेइंग दैट 87 raised to 24. Now 87 raised to 24, if I want to find the unit place of this, so unit place of this expansion is what? 7. Now divide this 24 by 4. When I am dividing 24 by 4, your remainder will be 0. Now 7 raised to 0, as per the rules of indices, 7 raised to 0 will be 1. But in case of the numbers which are ending with, अभी suppose if you are getting 82 here, 82 raised to 24 अगर आता है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या होगा? 6 ही होगा. In case of 2 and 8, if this power is exactly divisible by 4, that means remainder is 0. In that particular case, unit place of that whole expansion is 6. That is what we have discussed up till now. Now, let us try to understand how questions asked on this particular case. Now, while discussing the questions, I will again reiterate this concept. This is the first question, and if you are able to answer this question, you can answer the question. Chat box is open. Okay, try to answer this question. Now, this question is asking you the unit digit of 13 raised to 2003. 13 raised to 2003. Okay, so 13 raised to 2003, the unit place of this whole expansion will be decided from the unit place of a base, that is 3. Now, 3 is following the power cycle of 4. So, divide this power by 4. And देखो, all of you must be knowing the divisibility rule of 4.
What divisibility rule of 4 says that if the last two digits of a number is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. तो 4 का divisibility चेक करना है तो लास्ट के दो डिजिट्स पे फोकस करो. तो 03 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 3 रहेगा. सो 3 दैट इज यूनिट प्लेस ऑफ बेस एंड द रिमाइंडर इन दिस केस इज 3. 3 रेज टू 3 27 होता है. 27 का यूनिट प्लेस क्या होगा? 7. So 7 is the answer for this particular question. Yes. Okay. If you understood this, say yes in a comment box. This is the way we have to solve, my dear friend. यहाँ पे बेस पे भी देखो ये इस तरह से भी होता. 2813 raised to 2003 ऐसे भी होता. Still we have to concentrate on the unit place only. यूनिट प्लेस डिसाइड करने के लिए ये डिजिट्स का कोई भी रोल नहीं है. There is a role of only unit place. There is a role of only unit place. Okay, now let us try to solve this question. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन पढ़ो. Match the least one with the least two and select the correct answer. मीन्स आपको इनके सभी के यूनिट प्लेस निकालना है. ये सभी एक्सपांशंस के आपको यूनिट प्लेस निकालना है. इसका यूनिट प्लेस निकालो, इसका यूनिट प्लेस निकालो, इसका यूनिट प्लेस निकालो. कम ऑन एवरीवन. इफ यू वांट टू फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ दिस तो ये हटा दो. यहाँ पे क्या रहेगा? 7. 7 रेज टू मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज ऑलवेज एंड्स विथ 1. सो आपका जो भी ए रहेगा, ए इज एंडिंग विथ 1. यूनिट प्लेस 1 रहेगा. सो ए का पेयर 1 से जम जाएगा. यस, मैच. नाउ 3. 3 भी पावर साइकिल ऑफ 4 फॉलो करता है. डिवाइड दिस 19 बाय 4. इफ यू डिवाइड दिस 19 बाय 4 your remainder will be 3. So 3 raised to 3. 3 raised to 3 27. 27 का यूनिट प्लेस 7 है. तो B का मैचिंग किसके साथ जाएगा? 4 के साथ जाएगा. B का मैचिंग 4 के साथ जाएगा. In case of 9, we decided that 9 raised to odd number. This 21 is odd. 9 raised to odd number always ends with 9. So C का 9 होना चाहिए. So C should go with 5. So just select the option like this. Now A1, B4 and C5, your answer is option C. If you understood this, say yes in a comment box. This is a very good question. कल जो हमने कंसेप्ट लिया था माय डियर फ्रेंड, उस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल एंड सम क्वेश्चंस थोड़ा बहुत चेंज करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे. नाउ try to solve this next question. This is the next question for all of you and try to give me the answer. This is a very good question. Try to give me the answer. The digit in the unit place of the number 67 raised to 25 minus 1 must be. Yes. Now what do we have to do? We have to find the unit place of this. और उसमें से 1 subtract करके जो आएगा, that will be the unit place. That will be your answer unit place. That will be your answer unit place. Now 67 raised to 25 को figure out करना है. -1. Now decide the unit place here. तो यहाँ पे 7 ही रखो. Unit place 7 रखो. Now divide this power by 4. What will be the remainder? If you divide this power by 4, what will be the remainder? That is your new power. So that is, if you divide this by 4, there will be, remainder will be 1. So 7 raised to 1 minus 1. What is 7 raised to 1? That is 7. 7 minus 1, that is what? 6. So 6 must be the unit place of this. So your answer is option B. Option B. इतने जल्दी हो सकता है. If you understood this concept very well, my dear friend, your response time must be should not be more than 10 seconds. Should not be more than 10 seconds. It's a very good concept. Okay, now I will give some more time for solving next question. ये question के लिए मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ आपको. Take your time. I will wait. Again, it is a case of power cycle of 4, 7 and 3. Both follows the power cycle of 4. तो जनरली देखो 0, 1, 5, 6 के केस में पावर साइकिल ऑफ 1 फॉलो करता है. 4 और 9 के केस में पावर साइकिल ऑफ 2 फॉलो करता है. और 2, 3, 7, 8 के केस में पावर साइकिल ऑफ 4 फॉलो करता है. उस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उस पे ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. The digit in the unit place of a number represented by 7 raised to 95 minus 3 raised to 58 is.
divisibility rule of 4. So what we will do here, 7 raised to 95 अगर आप ले रहे हो तो and -3 raised to 58, so find the unit place of this and unit place इसका और इसका unit place लेके उसको subtract करना है. Now say this is 7 raised to 95, so new power will be 3 because when you divide 95 by 4 your remainder will be 3, minus 3 raised to 2 because when you divide 58 by 4 your remainder will be 2. So 7 raised to 3 कितना होता है 343 minus this is what 9. जस्ट सब्सट्रैक्ट 43 में से 9 सब्सट्रैक्ट कर दो. ओके बिकॉज 2 डिजिट यहाँ पे लेना पड़ेगा. 43 में से 9 सब्सट्रैक्ट करो. सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? सो इफ यू सब्सट्रैक्ट 9 फ्रॉम दिस देन 34 विल बी द रिमाइंडर. 34 का यूनिट प्लेस क्या होगा 4 होगा. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. समजलं असेल तर यस म्हणा. समझ में आया होगा तो यस बोलो. अगर देखो यहाँ इसका यूनिट प्लेस इस पर्टिकुलर 7 रेस टू 95 का यूनिट प्लेस क्या होगा 3 होगा. एंड व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ दिस 5 रेस टू 58 का यूनिट प्लेस 9 होगा. इफ यू आर सब्सट्रैक्टिंग दिस यू आर गेटिंग -6. और कभी हम नंबर्स -6 नहीं लिखते, नेगेटिव नंबर्स नहीं लिखते हैं, बट यू सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम 10 टू मेक इट पॉजिटिव. सो द यूनिट प्लेस विल बी 4. यूनिट प्लेस विल बी 4. गुड. नाउ try to give me the answer of this question. Now this question का आंसर जरूर आएगा. इसके लिए कंसेप्ट हमने क्या देखा था, मैं जो लोग नहीं थे उनके लिए कंसेप्ट बोल देता हूँ. 4 raised to even number always ends with 6. Keep this in mind. Always ends with 6. And 4 raised to odd number always ends with 4. और इसको याद करने के लिए मैंने आपको बोला था 4 स्क्वायर याद रखना एंड 4 raised to 1 याद रखना. 4 स्क्वायर कितना होता है 16. 16 का यूनिट प्लेस 6. 16 का यूनिट प्लेस 6 और 4 raised to 1 क्या होता है 4. 4 का यूनिट प्लेस 4. नाउ व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस पर्टिकुलर केस? व्हाट इज द यूनिट डिजिट हियर? व्हाट इज द यूनिट डिजिट हियर? 784 raised to 126 plus 784 raised to 127. 126 is a which kind of a number? This is a even number. 127 is which kind of a number? This is a odd number. तो आंसर आना चाहिए आपको. कुछ आपको पेपर पेंसिल भी यूज करने की जरूरत नहीं है. या मिटा दिया 4 raised to even ends with what 6 and 4 raised to odd will end with what 4. so दोनों का एडिशन करोगे तो that will be 10. 10 का यूनिट प्लेस क्या होगा 0. so your answer is option A. ऑप्शन ए. समजलं असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये यस म्हणा. इतकं सोपं आहे. क्वेश्चन दिखते वक्त हॉरिबल दिखता है. अगर कंसेप्ट अगर आपको पता है तो ये ड्रास्टिकली पत्तों जैसे गिर जाएंगे. कंसेप्ट अगर पता है तो. पर अगर कंसेप्ट पता नहीं है तो भूल जाओ, ये क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं. ये बनेंगे ही नहीं क्वेश्चंस. ओके. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इंस्टेड ऑफ मल्टी एडिशन हियर मल्टीप्लिकेशन इज देयर. और मैं फिर से बता देता हूँ, जो लोग नहीं थे उनके लिए मैं बता देता हूँ. हमने कल देखा था इफ जीरो जीरो अगर यूनिट प्लेस में है 0 raised to n ऑलवेज एंड्स विद 0. ओके. 1 अगर यूनिट प्लेस में है बेस के 1 raised to n ऑलवेज एंड्स विद 1. 5 raised to n ऑलवेज एंड्स विद 5. ओके. एंड 6 का कोई भी पावर आप ले लो तो वो 6 से ही एंड होता है. अभी अभी मैंने बोला आपको 4 और 9 के केस में तो बोला ही मैंने. 4 और 9 के केस में क्या चलता है? 4 के केस में इवन पावर विल एंड विथ 6. 4 के केस में ऑड पावर विल एंड विथ 1. 9 के केस में इवन पावर विल एंड विथ 1 एंड 9 के केस में ऑड पावर विल एंड विथ 9. और इसको याद रखने के लिए मैंने बोला था आपको यहाँ पे 4 स्क्वायर, यहाँ पे 4 raised to 1, यहाँ पे 9 स्क्वायर एंड 9 raised to 1. 9 स्क्वायर मीन्स 2 इज रिप्रेजेंट ऑल इवन नंबर, 1 रिप्रेजेंट ऑल ऑड नंबर. चलो मुझे आंसर देने की कोशिश करो. आपका क्वेश्चन इस तरह से है, इसका पावर दिया हुआ है. आपका क्वेश्चन इस तरह से है 2464 रेस टू 1793 multiplied by 615 raised to 317 multiplied by 131 raised to 491. तो हमेशा याद रखो, कम ऑन आंसर तो आ जाना चाहिए था अब तक. नहीं आ रहा है मीन्स दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न.
नाउ व्हाट इज द यूनिट प्लेस हियर? ये मिटा दो, 4 का 4 रेस टू व्हाट? ऑड नंबर. 4 रेस टू ऑड नंबर always ends with 4. Now 5 raised to anything will end with 5. 1 raised to anything will end with 1. सबका multiplication करना है. What is 5 fours are 20. 20 into 1 that is 20. So 20 का unit place क्या होगा? 0 होगा. So your answer is option A. And always keep this in mind. Even number जब आप even number multiplied by 5 करते हो या कोई भी multiple of 5 करते हो तो unit place में 0 ही आता है. Always keep this in mind. So whatever the expansion, ये expansion आपका even आने वाला था and इसका unit place 5 आने वाला है. तो without thinking too much आपका ध्यान 0 के तरफ जाना चाहिए था. Question समझ में आया होगा? If I am audible clearly, mention I in a comment box. Mention I in the comment box. Okay. Now, see, I just want to tell you one important thing. यहाँ पे एक important observation जो आपने भी किया होगा. अगर नहीं किया है तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो. Even number raised to anything, even number raised to anything is always even. मीन्स इवन नंबर का अगर आप कोई भी पावर लेते हो तो उसका एंड रिजल्ट इवन ही होता है. एंड odd number odd number raised to anything means this is even number raised to आप नंबर even हो या odd हो नेचर even ही होगा. सिमिलरली odd raised to even हो या odd हो इसका नेचर odd ही होता है. समझाने के लिए अगर मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे अगर लेता हूँ तो फॉर एग्जांपल 2 का फर्स्ट पावर भी 2 दैट इज इवन नंबर. 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 2 का इवन पावर. 2 का थर्ड पावर 8. So all these are even. If you take the 3 raised to 1, 3 raised to 1 is 3. 3 का स्क्वायर 3 का इवन पावर भी ऑड आ रहा है. 3 raised to 3 is 27. This is also odd number like that. And the next important observation is that even number plus odd number, this is always odd. Always keep this in mind. इवन नंबर प्लस ऑड नंबर हमेशा ऑड ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ 4 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 11. आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो. सपोज इफ आई एम टेकिंग 8 ईयर 8 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 11. Okay, so even number plus odd number that is equal to odd. Just take a note of these three important points और ये three important point पे से मुझे next question का मुझे answer आपको करना है. Come on everyone. Okay. Okay, very good. Now, let us try to understand this now and give me the answer of this particular. Now, this question is asked in UPSC CSAT 2024. अब सभी को पता है इस साल का यूपीएससी का सीसैट का एग्जाम इन मंथ ऑफ मे 25th ऑफ मे आई थिंक. तो आपको अगर आप यूपीएससी अगर दे रहे हो यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थरोली. देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दो तीन कंसेप्ट आपको चेक कर रहा है. दो तीन लॉजिक्स आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे. नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या दिया है. 222 रेस टू 333 प्लस 333 रेस टू 333 is divided by which of the following number? Now we have to use the elimination method also for solving this kind of a question. Now मुझे बताओ, this is 222 raised to 333. Okay, you can give your answer in a chat box also. Chat box is open. Now can I say this is even number raised to anything? Even number raised to anything. This is always even. So ये जो भी एक्सपांशन होगा ये एक्सपांशन इवन होने वाला है.
ये एक्सपांशन इवन होने वाला है. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस एक्सपांशन. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस एक्सपांशन? ट्रिपल थ्री, ट्रिपल थ्री रेस टू ट्रिपल टू, इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर क्या होगा? टेल मी. ट्रिपल थ्री इज विच काइंड ऑफ अ नंबर? दिस इज ऑड नंबर. Odd number raised to anything will be always what? Odd. Odd number will be, odd number raised to anything will be odd. So first expansion is even plus second expansion is odd. So what will be your result will looks like? Your result will be odd. Now tell me, my dear friend, odd numbers never divisible by 2. Odd number never divisible by 2. मैंने आपको 80% आंसर बता दिया. ऑप्शंस की तरफ देखो और मुझे आंसर बताने की कोशिश, करेक्ट चॉइस बताने की कोशिश करो. 80% आंसर मैंने बता दिया. दिस एक्सपांशन इज इवन, दिस एक्सपांशन इज ऑड. ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड होता है. तो आप ऑप्शन इलिमिनेशन करके, वेरी गुड, वेरी गुड केतकी, वेरी गुड यश. यस, देखो ये इवन प्लस ऑड विल बी ऑलवेज ऑड एंड ऑड नंबर्स आर नेवर डिविजिबल बाय जीरो. तो जहां पे मेंशन किया जा रहा है डिविजिबल बाय टू, ये पॉसिबल नहीं होगा. डिविजिबल बाय टू पॉसिबल नहीं होगा. डिविजिबल बाय टू पॉसिबल नहीं होगा. सो योर करेक्ट आंसर चॉइस इज ऑप्शन बी. Now look at this question. This question is asked in the most prestigious exam taken in India. ओके, जिसको कंसेप्ट ही पता है वो ही इसको 15 या 10 सेकेंड्स के अंदर में करने की ताकत रखता है. अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल टू डू इट इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट. इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट, माय डियर फ्रेंड्स. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे 37 का एक रेफरेंस है. 37, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नंबर एक्चुअली. 37, फर्स्ट ऑफ ऑल 37 इज अ प्राइम नंबर. ये याद कर लो, 37 इज अ प्राइम नंबर. और हमेशा याद रखो 37 को किसी भी 3 का कोई भी अगर मल्टीपल से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 का जो मल्टीपल से आप मल्टीप्लाई करते हो उतना वो 3 बार क्रिएट होता है. जैसे कि 37 इंटू 3 ट्रिपल वन होता है, माय डियर फ्रेंड. I what I meant to say that 3 is the first multiple of 3. That's why when you are multiplying first multiple of 3 to 37, then 1 will be created for 3 times. 37 multiplied by 6, ये triple two होता है. You can check it with the help of calculator. 37 into 9, since this is the third multiple of 9, 3 will be created for 3 times. Now tell me, use your logic, and 37 into 15 कितना होगा? Give me your answer in comment box. 37 into 15 कितना होगा? 15 is which multiple of 3? Come on, give me the answer quickly. भाई अगर ऐसे चीजें पता नहीं है आपको, yes, it will be triple five. Very good, yes, it will be triple five. It will be triple five. Yes, Rishabh. Now tell me, my dear friend, 37 into 24 क्या होगा? 37 into 24 क्या होगा? You can check your answer with the help of calculator. 37 into 24 क्या होगा? 24 is which multiple of 3? Yes, triple eight is the correct answer. Very good, Rishabh. Triple eight, triple eight. Very good, Yash. तो डेफिनेटली ये जो नंबर्स है, दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 37. तो उन नंबर्स का कौन सा भी पावर लेते हो तो वो तो डिवीजन होने ही वाला है. तो 37 से डिवीजन होगा, डेफिनेटली होगा. So this number is divisible. And again, what is the divisibility rule of 3? Sum of the digits of a number. Sum of the digits of number. इसका digits का sum कितना हो रहा है? 6. इसका digit का sum कितना हो रहा है? 9. तो definitely करने की जरूरत नहीं है, but I just want to justify why 37 and 3 are there. और ये 37 के बारे में एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन हमारे पास है. So take a note of this. Okay. Now नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर. ये भी क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2024 में पूछा हुआ है. थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड जरूर है. हम साथ में करते देखो क्वेश्चन को. नाउ व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट? राइट मोस्ट डिजिट इज नथिंग बट यूनिट प्लेस. कल मैंने बताया था, राइट मोस्ट डिजिट इज नथिंग बट द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रीसीडिंग जीरोस इन द वैल्यू 30 raised to 30. प्रीसीडिंग देखो कितना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. 30 raised to 30. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, can I split this 30 as 3 into 10 raised to 30? Mention something in the chat box. क्या मैं इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूँ? 30 raised to 30 is equal to
3 into 10 raised to 30. Now, as per rules of indices, I can say that this is 3 raised to 30 multiplied by 10 raised to 30. 10 raised to 30. Yes or no? Yes or no? Okay. Now, यहाँ पे जितने भी देखो यहाँ पे 1 पे कितने जीरोस आने वाले, देयर विल बी 30 जीरोस, 30 जीरोस यहाँ पे 30 जीरोस रहेंगे, 30 जीरोस रहेंगे, डॉट 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 चलते रहेगा ही. This will be continued, this will be continued, dot dot 30 times. Now you have to find only the unit place of this, unit place of this. Now find the unit place of this. Which power cycle this 3 follows? 3 follows a power cycle of 4. Divide this 30 by 4. If you divide this 30 by 4, what will be the remainder? What will be the remainder? So your new situation looks like 3 square. Because when you divide this 30 by 4, your remainder will be 2. तो 3 raised to 2 that is equal to what? 9. और उसके ऊपर कितने जीरोस होंगे? 30 जीरोस होंगे. There will be 30 zeros like this. और इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी कुछ ना कुछ नंबर्स होने वाले हैं. We want the digits preceding this zero, that is what 9. Your answer is option B. अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो say yes in a comment box. It's a very good question. इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो. एप्लीकेशन कर पॉसिबल होगा. एप्लीकेशन इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इफ यू नो द concepts, इफ यू नो द concepts, my dear friends. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी 2024 का क्वेश्चन है. दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन. डिविजिबल बाय, यस्टरडे वी डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10. डिविजिबिलिटी रूल्स में सबसे आसान डिविजिबिलिटी रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10. What divisibility rule of 10 says that if the unit place, unit में at least 1 अगर 0 है तो वो नंबर को पूरी तरह से 10 से डिवीजन होगा. चलो, what I will suggest you, find the unit place of this expansion. इसका यूनिट प्लेस निकालो, दोनों का एडिशन निकालो, देखो क्या हो रहा है. पहले तो आप ये काम कर लो. 32 रेस टू 5 इसका यूनिट प्लेस निकालो, प्लस 2 रेस टू 27 इसका यूनिट प्लेस निकालो, और दोनों का यूनिट प्लेस क्या आ रहा है देख लो. वेरी गुड केतकी, वेरी गुड. सो दिस इज 2 2. दिस इज द पावर साइकिल ऑफ 4 फॉलो कर रहा है. पावर साइकिल ऑफ 4 अभी तक तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए. पावर साइकिल ऑफ 4 फॉलो कर रहा है तो इसको हम 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा न्यू इंडेक्स होगा 2 रेस टू 1. यहाँ पे पावर साइकिल ऑफ 4 फॉलो कर रहा है, दिस विल बी 2 रेस टू 3. सो दिस इज 2 एंड 2 रेस टू 3 इज 8. सो व्हाट इज द यूनिट प्लेस? 0. अगर 0 अगर है तो डेफिनेटली दैट नंबर इज डिविजिबल बाय, that number is divisible by 10. Yes, very good. Yes, 10 seconds के अंदर अगर आप क्वेश्चन, if you look at your responses, Ketki, Yash, Rishabh, if you look at your responses, there are 10-15 seconds. Concept आपको इतना प्रबल बना सकता है. Okay, now this is the question asked in 2023. देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है. This is a very similar question, but instead of giving the number in the power, they have given here the number in the product. Product दे दिया है, प्रोडक्ट दे दिया. सो आपको क्या पूछा है? 57,242 रेस टू, ये सारे नंबर दे दिए. 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1. तो अब आप सभी को पता है यहाँ पे कौन सा भी नंबर हो उससे कुछ लेना देना हमें नहीं होता है. वी विल जस्ट इलिमिनेट ऑल दीज नंबर्स और हमारा कॉन्सेंट्रेशन 2 पे रहेगा. और 2 फॉलो करता है पावर साइकिल ऑफ 4. पावर साइकिल ऑफ 4 फॉलो करता है तो चलो इसको 4 से डिवाइड करके सिर्फ रिमाइंडर के बारे में सोचो. Okay, so 2 raised to, when you divide this by 4, what will be your remainder? 1. If you divide this by 4, what will be your remainder? 3. If you divide this by 4, your remainder will be 1. और इन दोनों को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 3 and 1 ही रहेगा. नाउ मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे. 3 3 are what? 9. So 2 raised to 9. मल्टीप्लीकेशन में 1 है, कोई मायने नहीं रखता. 2 raised to 9 को फर्दर रिड्यूस हो जाएगा 2 raised to 1. And what is 2 raised to 1? 2 raised to 1 is 2. So the unit place of this whole expansion will be 2. I hope you understood this. I hope you understood this. देखो यहाँ पे पूरा नंबर ना देते हुए उसको स्प्लिट कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया. तो इन दिस वे यस्टरडे व्हाटएवर वी स्टडीड माय डियर फ्रेंड, उस ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस, ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं
ये यहाँ पे हमने कंप्लीट किया. So thank you very much for listening me very patiently and politely. I hope you understood this particular topic very well. Tomorrow when we will meet, we will discuss the questions on finding the number of zeros at the end of any product. Okay? Chalo. Thank you very much. Bye bye. Happy learning and good night.